Good evening, everyone. This is the analysis of your question paper, set B. So today we will discuss this set B. So in the set B, we will start with the MCQ. So first MCQ is at the beginning of an accounting year, a club has assets of rupees 19,000 and the liability of the rupees 5,000 and rupees 1,800 is the debit balance of the income and expenditure account. Opening capital fund is there are the four options are there: 18,000, 11,200, 15,800, and 24,800. So we have to find out the opening balance. So formula of the opening balance is the assets plus debit balance of the income and expenditure minus liability. So 19,000 plus 1,800 will be the 20,800 minus liability 5,000. So answer will be 15,800, and that is your option C. Option C is your correct answer. Let's move to the question number two. Question number two, what are the super profit? So super profit is equal to actual profit minus normal profit. So your answer will be the A. Third point, X Limited forfeited 1,000 equity share of 10 rupees each issued at the premium of 20% for the non-payment of final call of rupees 2 per share. Calculate the maximum amount of discount at which these share can be reissued. So हमें नहीं मिले हैं 2 रुपए और 8 रुपए हमें मिल गए हैं. So इसका maximum discount होगा 8 rupees. So option B is right. 8. Question number 4, in the case of charge in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio, the accumulated profit are distributed to the partner in new ratio, old ratio, sacrificing ratio, and equal ratio. Answer will be B, old ratio. Question number 5, calculate the value of goodwill 3-year purchases when the capital employed 2,50,000. Average profit is 30,000. Average profit is 30,000 and the normal rate of return is 10%. So we have four options: 3,000, 25,000, 30,000, and 15,000. So your answer will be 15,000 D. Question number 6, PQ are the partner profit. PQ are the partner having the capital of 15,000 each. It means P's capital is 15,000, Q's capital is 15,000. R is admitted for 1/3 share, for which he has to bring 20,000 for his share of capital. The amount of goodwill will be. So I have showed you the calculation in my PPT. So just go through. First of all, what we have to do, we have to find out the base of R's capital. So R is admitted for 1/3 share. So I have reciprocal. First we have to reciprocal. So it will be 3/1 multiplied by 20. So this will be the 60. 60 will be the total capital on the base of R minus or subtract P's capital 15,000, Q's capital 15,000, R's capital 20,000. The total of PQR's capital is 50,000 minus 60,000. 10,000 will be your goodwill of the firm. So answer B, 10,000 will be your right answer. Question number 7, ABC are the partner profit sharing ratio 5:3:2. They decided to share future profit in the ratio of 2:3:5. What will be the accounting treatment of the workman compensation reserve appearing in the balance sheet on that date when no other information is available? When the no other information is available, so we will distribute among the partner in old ratio. So your B option is right. Question number 8. In the question number 8, goodwill of the firm was valued at 2-year purchases at the average profit of the last 3 years. The profit were as under 15,000, 20,000, including the abnormal gain
2015-16 40,000 after charging the abnormal loss. 2016-17 40,000, calculate the amount of goodwill. So we have to calculate the amount of goodwill. So you know that abnormal gain we have to minus, abnormal loss we have to plus. So goodwill is equal to 20,000 minus abnormal loss 5,000 plus 40,000 plus 10,000 abnormal loss plus 40,000 divided by 3 to find out the average multiplied by the number of the year purchases, that is 2. So your answer will be 70,000. 70,000 means A option is the right. Move to the next question. Question number 9. In the question number 9, retirement or the death of the partner will be created a situation for the continuing partner which is known as dissolution of firm, dissolution of the partnership, wind up of the business, none of the above. So our point A is the right answer, dissolution of the partnership. Only the partnership will dissolve. Next is question number 10. A, B, C are the partners. C expired on the 18th of December 2019, and as per the agreement, surviving partner A and B decided that the accountant will prepare the final statement on the 18th of December 2019. According to his share of the profit of C was calculated as 12 lakh, which will be debited to the transfer C's share of the profit, P&L suspense account, profit loss appropriation account, and profit loss account, and none of above. So your right answer will be profit and loss suspense account. So answer A will be the right answer. Question number 11, Ram Mohan and so on were the partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3. Mohan retired and his share was taken over by Ram and so on in the ratio of 2:1. Calculate the new profit sharing ratio. So for this, I have done the calculation. I showed you the calculation in my PPT. Just see the calculation. The profit share taken by A out of B's profit sharing ratio 3 by 10 multiplied by 2 by 3. So 2 by 10. The new profit sharing ratio is equal to gain. Old plus gaining. Old ratio is 5 by 10 plus 2 by 10. 7 by 10 is the new profit sharing ratio for A. Another one is profit share taken by C out of B share. So 3 by 10 multiplied by 1 by 3. So 1 by 10. 1 by 10. So we will find out the C's new profit sharing, old plus gaining. Old is 2 by 10 and gaining is 1 by 10. So 3 by 10 will be the new share of C. So 7 is to 3 will be the new profit sharing ratio. So your answer B is right. Go to the question number 12. Premium on the issue of the share and the debenture can be used for premium. अगर शेयर और डिबेंचर इशू करेंगे तो उनका पैसा कहाँ यूज कर सकते हैं? Issue of the fully paid up bonus share, writing of the preliminary expenses, writing of the discount or loss on the issue of the debenture, all the above. So हम इसका पैसा यूज कर सकते हैं डी, ऑल अबव तीनों केसेस में हम इसका पैसा यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, reserve and accumulated profit are transferred to the partner's capital account at the time of reconstitution. So जब हम reserve and accumulated profit का transfer to the प्रॉफिट एंड पीसीए एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, तो हम उसमें क्या करते हैं, तो हम उसको ओल्ड रेशियोज में डिवाइड करते हैं. सो ओल्ड रेशियो में जब डिवाइड करेंगे सो ए आंसर विल बी योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. In the question number 14 we have to make from the following information calculate the amount to be charged to income and expenditure account for the sports material consumed for the year 2019 and 20. So we have made the creator for the sports material account. For in that balance beat is already given into the question, that is 2 lakh rupees. To
By balance BD is given 2 lakh rupees in your question. To bank 6 lakh rupees given in your question. To balance CD 1,60,000 is given in your question. So we will find out the vendor or the creditors purchase of sports material. Credit purchase of sports material, that is 5,60,000. That is your balancing figure. This will carry forward into the calculation of the sports material consumed. So credit purchase of sports material is 5,60,000. We will add the cash purchase of the sports material 2,60,000. We'll also add the stock of the sports material 1,20,000 plus the book value of the sports material sold during the year, that is 70,000. We put into the minus, that's why I put into the bracket. We have to subtract this one. So we will find out the sports material consumed 8,70,000. Let's move to the another option. This is, it has two options. So another options we have to calculate, we have to make the subscription account. Into the subscription account we have the following balances. To balance BD, area in the beginning is given 80,000 in your question. By balance BD 70,000, advance in the beginning is given in your question. Receipt by receipts and payment account 15,000, 15 lakh 60,000, which is given in your question. By income and expenditure 30,000 is given, and by balance CD 1 lakh is given in your question. In the two side, by balance CD advance at the end 1,10,000, which is also given in your question. So we have to find out the 15,70,000 capital income and expenditure. Go to the question number 15. In the question number 15, we have the 3 years, 3 past year profit and capital investment of the firm, that is 1,20,000. Normal rate of capital 10%, and we have to calculate, we have to pass the journal entry for that. We have to calculate the goodwill and we have to pass the journal entry for that. So first of all, we have to find out the sum of profit 36,000, 40,000 plus 44,000. That will be the 1,20,000. Average profit of 1,20,000 divided by 3. You will get 40,000 will be the average profit. Normal profit is equal to, then we have to find out the normal profit. Normal profit is 1,20,000 multiplied by 10 upon 100. 1,20,000 is your capital investment or capital employed. So that will be the 12,000. Super profit, normal profit, average profit minus the normal profit. Average profit is 40,000 and normal profit is 12,000. So 28,000 will be your super profit. Goodwill is equal to super profit multiplied by the number of the year purchases. Super profit is 28,000 multiplied by 3. So 54,000 will be your goodwill. And in this case, the gaining share of Rohan is 1/2. Sacrificing share of Rohan is 1/2. So entry will be the Sohan's account debit to Rohan. Hope you will understand it. Another one, question number 15. That in this question we have to make the profit loss appropriation account. In this question, old ratio is 3:2 is given. Ramesh is admitted for 1/6 share, and X has personally given the guarantee to Z. That Z is admitted, so X has given the personal guarantor to Z. Z that Z after charging the interest on capital 10%, there would not be less than 30,000. उसका profit 30,000 से कम नहीं होगा interest on capital charge करने के बाद किसी भी साथ. So capital of XYZ is 2,50,000, 2 lakh and 1,50,000. So the profit of the year is 1,50,000 before providing the interest on capital. तो हम interest on capital net profit में से minus कर लेंगे और profit for appropriation account बनाते हैं सबसे पहले. A new ratio दिए 3:1. So by net profit 1,50,000, interest on capital XYZ is 25,000, 20,000 and 15,000. Profit is, when we divide it into the ratio,
in old ratio. So profit is 45,000 for X, Z is 30,000, Y is 30,000, and Z is 15,000. The deficiency is 15,000, and X is promised to give the 15,000 deficiency. So 15,000 we'll subtract from the X capital and we will add into the Z's capital. So everyone's profit 45 minus 15, 30,000 will be the X capital, Y's capital 30,000, Z is 30,000, which is guaranteed already given to him. Question number 16. The question number 16, we have to find out the missing figure. This is question belong to the share chapter, accounting for the share capital. So first one is equity share capital is general interest given. So we have to find out the security premium reserve. So it's a very simple 47,000 minus 940 and 6,110. So you will simply get the security premium reserves. In the second entry in the bank account debit, two things are give missing. So we know that first is equity share capital we can write, and another one SPR, security premium reserves. So how many shares we have reissued? We have issued the 60 shares and 14 rupees each. Face value is 10 and we issued at the 14 rupees. So 4 rupees will be the security premium reserve. So what we will do, equity share 60 multiplied by 10, 600. We will write into the credit side, security premium 60 into 4, 240. We will write into the security premium amount. Another one is the forfeiture account. Another last entry for the capital reserve, forfeiture account debit to capital reserve. We know that. So one 2 rupees gain on shares, so 60 shares are there, so that's why 120 will be your capital reserve. Next question number 17. In the question number 17 we have we have to pass the 4 dissolution journal entry. Entry number 1, L, the partner, was appointed to after the dissolution process for which he has given the remuneration of 10,000 rupees. हमने इसको 10,000 rupees remuneration देना डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, so हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल 10,000 rupees 10. So question point number second, B point, realization expenses 5,000 will be bore and paid by Karan, a partner. So Karan ही देगा और उसी ने ही उसको देने हैं, और जो कि एक पार्टनर है, तो जब पार्टनर एक्सपेंसेस बियर करता है और वही पे करता है तो उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करते. The expenses of the dilution will not be passed because the expenses are borne and also paid by the current the partner. तो हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. Point number third, machinery, the book value 60,000 given to the creator at the discount of 10% इन सेटलमेंट. जब क्रेडिटर्स को हम एसेट से सेटल करते हैं तो उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं. नो एंट्री विल बी पास इफ द एसेट्स गिवन इन द सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी, तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं. फोर्थ, डी, इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 40,000 रियलाइज्ड एट 150%. तो हम 40,000 का 150% निकाल लेंगे. वो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 150 upon 100 will be 60,000. So bank account debit utilization account 60,000. Hope answer will be clear. After that, if you have any doubt, so you can WhatsApp me. Question number 18. In the question number 18, A, B, C are the partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They fixed capital worth 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively. For the year ended 31st March 2020, interest on the capital was credited to them 10% instead of 8%. There is a twist. Interest on the capital was credited to them 10% instead of 8%. Showing the working note clearly, adjustment entry to rectify the above. एक entry पास करनी है इसके लिए. तो सबसे पहले हम जो हैं, जो wrong percentage है कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो निकालते हैं.
सो फर्स्ट पॉइंट हमने यही लिखा है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड टू द 10%, नाउ रिवर्स इट। तो हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट करी थी, अब हम डेबिट कर देंगे। और ये टेबल बनाने के लिए आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, माइंड में रखनी है, कि जो कुछ भी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा वो फर्म्स में क्रेडिट होगा, जो फर्म में डेबिट होगा वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो डेबिट में हम 30,000, 20,000 एंड 10,000 हमने इसको डिवाइड कर दिया फुल रेशियोज में 532 में। दैट विल बी, और उसका टोटल जो है 60,000 फर्म के अकाउंट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 8% चार्ज करी है हमने, तो सही हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो 8% विल बी, सो 24, 16 एंड 8,000 ये हमने फाइंड आउट करी है। इसका टोटल लगाया और हमने इसको 48 को डेबिट कर दिया। फिर हमने प्रॉफिट क्रेडिट टू द पार्टनर्स इन 532, उसको हमने जो उनका डिफरेंस आया 60 माइनस 48, 12,000, वो हमने 532 के रेशियोज में डिवाइड कर दी। दैट विल बी 6,000, 3,600, 2,400, और इसका टोटल 12,000 रुपीज हमने डेबिट कर दिया फर्म्स के अकाउंट में। फाइनल हमने एडजस्टमेंट्स किए, सब नेट इफेक्ट निकाला। सो वाइस के अकाउंट में 400 डेबिट में पड़े हुए हैं, जेड के अकाउंट में क्रेडिट में पड़े हैं, तो एंट्री हो जाएगी वाइस करंट अकाउंट डेबिट 400 टू जेड्स करंट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट on the capital excessive charge now rectified. That will be your question number 18. Question number 19. In the question number 19, we have to find out the surplus. So book value of depreciation of book value is 4,000 is given in your question. Loss on the sale of furniture 1,000. Salary, rent, repairs, everything is given in your question. By subscription 1,20,000. Add सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हुए हम एक पॉइंट और याद रखते हैं कि हमें इसी साल के आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस को लेने हैं, पिछले साल के आने वाले साल के नेक्स्ट ईयर के हम माइनस करते हैं और इस साल के ही प्लस करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन है हमारा 1,20,000, एडवांस फॉर द करंट ईयर 8,000 ऐड करेंगे, लेस करेंगे एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का दैट्स व्हाई वी हैव टू सब्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर माइनस करेंगे, क्योंकि पिछले साल की हमें मतलब नहीं, इस साल की ही लेनी है। एड द आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, इस साल की आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, हम उसको ऐड करेंगे। तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया 1,20,000, डोनेशन हमारी 4,000 की है, इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट हमारा 18,000 का, तो हमारा टोटल आ गया 1,42,000, 1,42,000। इसकी हमने बैलेंस शीट एक बनाई है जिसमें हमने एसेट साइड में सारे एसेट्स डाले हैं। कैश 2,000, 5% इन्वेस्टमेंट 3,60,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, बुक वैल्यू 53 एंड बिल्डिंग 60,000। लाइबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 रुपीज। कैपिटल फंड के लिए हमें एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी लास्ट ईयर की 2018 की, वो भी हम आपको डिस्कस करते हैं बाद में। एट द लाइफ टाइम मेंबरशिप इज 14,000 और सरप्लस इज 15,000। सो हमारे पास लास्ट ईयर की बैलेंस शीट मैंने ये बनाई है, इसमें भी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000 और एसेट साइड में हमने कैश, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, बुक वैल्यू, फर्नीचर डाला है। कैपिटल फंड हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर 4,29,000 आया है, और इन्वेस्टमेंट 5% इन्वेस्टमेंट की जो हमने 1,80,000 1,80,000 वैल्यू निकाली है। सो 9%, 5% इन्वेस्टमेंट है, तो पूरे साल का हमारा इंटरेस्ट है 9,000, तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 5, तो इन्वेस्टमेंट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा 1,80,000। सो वो इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। So we'll go to the another question, question number 20. Question number 20 जो है हमारा डिबेंचर क्वेश्चन है। सो इस डिबेंचर क्वेश्चन में हम देखते हैं थ्री पॉइंट्स आते हैं। ए पॉइंट नंबर 1, ए बी लिमिटेड issued 30,000 12% डिबेंचर of 10 rupees each at a discount of 5 rupees to be repaid at par at the end of the 5 year. So हमारा 30,000 डिबेंचर हैं
और हमने इशू किए हैं 5% डिस्काउंट में, यानी 100 रुपये के बदले हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा 95 रुपीज़। और हमें रीपेमेंट जो करना है वो 100 रुपीज़ करना है, एट पार पे करना है। तो हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 95, सो इट विल बी 28,000 28,50,000 20 एंड, और यही अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे 28,50,000। इसकी हम सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 28,50,000, डिस्काउंट है हमारा 5 का, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, सो विल बी 1,50,000। सो ये डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा हमारा 1,50,000, और 10% हमारे डिवेंचर है 12%, दैट विल बी द 30 लाख। पॉइंट नंबर बी, issue of 60,000 12% debenture of 10% each as a discount of 5% payable at the premium 10%। तो हमें ये भी शेयर, हमने जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 5% डिस्काउंट पे किए हैं, लेकिन रीपेमेंट हमने इसका 10% प्रीमियम पे किया है। लेट्स सी what will be happen। so entry will be the bank account debit, same 60,000 रुपीज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इसका नंबर ऑफ द डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 100, सो 6,600 शेयर डिबेंचर्स निकल के आए। 600 मल्टीप्लाइड बाय 95, सो 57,000 will be your amount received in the bank। तो 57,000, 57,000। Another one, transfer entry, debenture application allotment account debit, loss on issue of debenture, and 10% and 12% debenture। So 57,000 तो हमें पता ही है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पड़े हुए हैं, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5 मल्टीप्लाइड बाय 600, सो दैट विल बी द 3,000 हमारा लॉस हो गया, और डिबेंचर अकाउंट में हमारे 60,000 आ गए। पॉइंट नंबर 3, issued rupees 70,000 12% debenture of 100 rupees each, premium of 5% and redemption at 110%। so हमारा 100 का लिया, 5 का प्रीमियम और 110। so what will be the answer? so फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने का लिया है हमने, 105 रुपए का। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ द डिवेंचर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ द डिवेंचर हैं आपके 70 डिवाइडेड बाय 100, तो 700 शेयर्स डिवेंचर हो गए। 700 यस 700 मल्टीप्लाइड बाय 105, तो 73,500 हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया। लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया हमारा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ द डिबेंचर 7,000, और डिबेंचर में हमारे 700 मल्टीप्लाइड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी द 70,000। एसपीआर हो गया हमारा 5%, 5 मल्टीप्लाइड बाय 700 3,500। प्रीमियम रिडेम्पशन हो गया हमारा 10%, सो 700 multiplied by 10% by 10, so 7,000। I hope it's clear to you। if you have any doubt you can WhatsApp me। question number 21, that question belongs to the admission, we have to pass a journal entry for that। first of all, journal entry we have to pass the value of the plant and machine to be reduced by 20,000। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू जो है 20,000 रिड्यूस हुई है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू द प्लांट एंड मशीन 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की वैल्यू जो है आपकी इंक्रीज हुई है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 1,80,000, बैलेंस शीट में दे रखी है 1,40,000, सो 40,000 इंक्रीज हुआ है, तो हम उसको लैंड एंड बिल्डिंग को 40,000 कर में डेबिट कर देंगे। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है
वो पॉइंट नंबर 1, ऑल द डेब्टर्स आर गुड, सो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमारा 0 हो गया, तो 40,000 प्रॉफिट हो गया. सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू द रेवोल्यूशन अकाउंट 80,000. नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर एक्सेप्टेड, व्हेन द क्रेडिटर एक्सेप्टेड द बिल, तो हम उसकी एंट्री पास. अनिल इज द creditor, so we will pass the entry creditors account debit to the bills payable 40,000 40,000. सो उसका हम पीएनएल रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू टीज एस करंट अकाउंट एंड टू टीज करंट अकाउंट. So that will be the 60,000. 60,000 divided into the old ratio, that is 5 3 is to 2. So 3 by 5 and 2 by 5. Okay, and there is one thing, goodwill is appeared into the balance sheet. When the old goodwill is appeared into the balance sheet, we will transfer or we will distribute into the old ratio. So goodwill is 20,000, so 20,000 should be divided 3 by 5 and 2 by 5. That will be the 12,000 and 8,000. So we will pass the entry for that. After that, the new goodwill bought by the new partner. So goodwill and the capital bought by the new partner is 1 lakh is the capital and 10,000 is the goodwill for the premium for the goodwill. So cash account debit to the piece capital to the premium for the goodwill, that will be 1 lakh 10,000. 1 lakh will be the capital and 10,000 will be the goodwill. फिर हम गुड प्रीमियम फॉर द गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, in the sacrificing ratio to the partners. So premium for the goodwill account debit to the S current account to T's current account. और sacrificing ratio है आपका 3:2 because new ratios दिए हुए नहीं है, तो इसके हम old ratio में ही divide करेंगे. तो 10,000, तो जब 3 by 5 और 2 by 5 करेंगे तो 6,000 and 4,000 आएगा. जनरल रिजर्व्स को भी सेम ट्रीटमेंट देंगे. जनरल रिजर्व्स को भी हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे. 1,20,000, 3 by 5 and 2 by 5, 72,000 and 48,000. वर्कमैन कंपनसेशन हमारा बैलेंस शीट में 1 लाख, बैलेंस शीट में 50,000 दे रखा है. 20,000 रुपीज का क्लेम है, क्लेम हम हम क्लेम माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे. दैट्स ऑल योर क्वेश्चन. गो टू द क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन. ऑप्शनल क्वेश्चन इज गिवन हियर. दिस क्वेश्चन टू द retirement. So in this question, we have to make, first of all, we have to make the revaluation account. So हमारा स्टॉक लेस हो रहा है 900 से, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे. प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस भी हमारा बढ़ रहे हैं, तो हम इसको डेबिट करेंगे. प्रीमाइसेस हमारी बढ़ रही है 16,000 से, सो हम इसको क्रेडिट करेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारे 100 रुपीज से इंक्रीज कर रहे हैं, सो हम इसको डेबिट करेंगे. सॉरी, कम हो रहे हैं तो हम इसको डेबिट क्रेडिट करेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारे कम 100 रुपए से कम हो रहे हैं, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे. फर्नीचर भी हमारा 4,000 से बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे. फिर हम पीसीए बनाएंगे. आपको पीसीए पता ही है. सबसे पहले वी विल ट्रांसफर द ओल्ड कैपिटल 46,000, 30,000 एंड 20,000. जनरल रिजर्व्स को हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था. 6,000, 4,000 एंड 2,000. रिवोल्यूशन अकाउंट हमने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है ओल्ड रेशियो में. रिवोल्यूशन अकाउंट से लेके आना है 9,000, 6,000 एंड 30,000. और क्रिश की कैपिटल 14,000, और उसको हम लिखेंगे वरिष्ठ के अकाउंट में. Another one is two side, come to the debit side. वरिष्ठ कैपिटल कृष्ण दिए 14,000, तो हम उसके अकाउंट में लिख देंगे. वरिष्ठ का लोन है 26,000 का, जिसको ट्रांसफर करना है, और उसको हमने कैश पेमेंट किया है 28,000. तो हमारे बैलेंस सीडीज आ गए 47,000 एंड 25,000. इसके बाद we have made the balance sheet. After all the adjustments, we have to make this balance sheet. I hope this balance sheet is clear to you. So if you have any doubt, you may WhatsApp me. After that, we have the question number 22, shares question. In this shares question, we have the adjustment
what we have the adjustments. The shares chapter, let me check. Question number, this is 22. Okay, in the question number 22, Z Limited issued the prospectus inviting the 5 lakh shares. अपने 5 lakh shares invite किए हैं. Equity share 10 rupees each, issued at the premium of 10 rupees means 1 rupee. Application 3 rupees. Allotment 4 means including pre-up means 4 plus 1. 3 rupees on call. 3 rupees on call. Total application हमें रिसीव हुई है 6,60,000. Application was made as follows. 4 लाख शेयर वर अलॉटेड फुल. जिन्होंने 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने उनको पूरे 4 लाख इशू कर दिए. जिन्होंने 2 लाख के लिए अप्लाई किया था हमने उनको 50% शेयर प्रोरेटा बेसिस पे किए. और उनका जो 50% अमाउंट है वो हमने एडवांस मान लिया अलॉटमेंट पे. और 60,000 शेयर्स को हमने रेगुलेटरी लेटर दे दिया, यानी हमने कोई शेयर इशू नहीं किया, उनका पैसा हमने वापस कर दिया है. उसके बाद एक शेयर होल्डर, ए शेयर होल्डर टू होम होल्डिंग द 500 शेयर वर अलॉटेड अंडर द कैटेगरी ए. ए कैटेगरी है आपकी 4 लाख वाली कैटेगरी, जिसमें 4 लाख शेयर अप्लाई किए थे, हमने उसको पूरे 4 लाख अलॉट कर दिए. paid the full amount on paid full amount on the share allotted to him along with the allotment money. उसने सारा पैसा हमें allotment money के साथ दे दिया. Another shareholder जिसके पास 1,000 शेयर थे were allotted under the category B. उसकी कैटेगरी बी थी. कैटेगरी बी है हमारे पास 2 लाख शेयर्स वालों को हमने कितने दिए 50,000 शेयर दिए, यानी 1 लाख शेयर्स दिए हैं. फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. उसने अलॉटमेंट हमें जो ड्यू हुआ था वो पे नहीं किया है. हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड. और अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं. देन दीज शेयर वर रीइश्यूड एट 14 रुपीज. और वो 14 रुपीज के रीइश्यू पे पेड अप है 7 रुपीज. और सेकेंड और कॉल जो है की नहीं गई है, कॉल हमने करी नहीं. तो सबसे पहले बैंक की एंट्री में हम 6,60,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 19,80,000 रुपीज. सो 19,80,000 डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू द शेयर एप्लीकेशन. 19,80,000 19,80,000. फिर हम इसकी ट्रांसफर की एंट्री करेंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू द शेयर कैपिटल to the share allotment advance and to the bank refund. बैंक वाली एंट्री रिफंड, जब बैंक की एंट्री क्रेडिट होती है तो रिफंड होता है. तो हमने रिफंड कितना करना है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी 3, तो 1,80,000 हमने इसको वापस कर दिए. और हमारे 1 लाख शेयर्स जो है एक्सेस हैं. 1 लाख शेयर की 2 लाख शेयर्स के लिए कैटेगरी बी में अप्लाई किया था, उसको हमने इशू किए हैं 1 लाख शेयर. तो 1 लाख शेयर विद एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज. तो एडवांस है हमारे पास 3 लाख रुपीज का. और शेयर कैपिटल है हमारे पास 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 15 लाख की. सो ये 3 अमाउंट हमारे पास आ गए. अब हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट की. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू द शेयर कैपिटल टू द सिक्योरिटी प्रीमियम. और प्रीमियम हमारा 1 रुपए का. सो शेयर अलॉटमेंट हमारे 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज, सो दैट विल बी द 25 लाख. शेयर कैपिटल है हमारे पास 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज. 20 लाख हम शेयर कैपिटल में डालेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा 1 रुपीज का. 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 5 लाख रुपीज विल क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. बैंक अकाउंट इसकी एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए. क्योंकि इसमें जो कॉल इन एरियर हमें निकालनी है कि कॉल इन एरियर कैटेगरी बी की है और कैटेगरी बी ने हमें एडवांस दे रखा है. तो जो हम 1000 जो उसके 1000 शेयर जो हम फॉरफिट करेंगे तो उसमें से हम एडवांस अमाउंट भी माइनस करना पड़ेगा जो उसने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमें दे रखा था. सो अप्लाइड अलॉटेड शेयर दिए 1000, तो हम इसके अप्लाइड शेयर निकालेंगे. अप्लाइड शेयर निकालने का फार्मूला होता है अप्लाइड शेयर अपॉन अलॉटेड शेयर इनटू द डिफॉल्टर्स. अप्लाइड शेयर हमारे 2 लाख हैं, अलॉटेड शेयर 1 लाख हैं, डिफॉल्टर्स हैं यानी अनपेड है 1000 शेयर. सो हमारे अप्लाइड शेयर निकल के आ गए 2000 शेयर्स. जिसको हमने 1,000 शेयर इशू किए उसने अप्लाई किया हुआ 2000 शेयर के लिए, तो उसके हमारे पास 1000 शेयर एक्सेस पड़े होंगे.
तो 1000 शेयर जब उसके एक्सेस पड़े हुए हैं तो उसने एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज साथ में भेजा होगा। सो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3000 रुपीज हमारे पास एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इसके एडवांस पड़े हुए हैं अलॉटमेंट के, और इसका अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज इंक्लूडिंग द प्रीमियम। तो 5000 रुपये हमें इसने हमें नहीं दिए हैं, पर 3000 रुपये वो एप्लीकेशन के टाइम पे हमें दे चुका था, तो वो हम 3000 रुपये इसमें माइनस कर देंगे। तो हमारा कॉल्स इन एरियर आ गया 2000 रुपये, कॉल्स इन एरियर 2000, दैट इज कॉल्स इन एरियर वी हैव रिटन हियर, कॉल्स इन एरियर 2000 rupees we have written here. So calls in area 2000 rupees, और हमारा शेयर कैपिटल होता है ड्यू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज 25 लाख रुपीज, और 3 लाख रुपीज हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में पड़े हुए हैं, वो हमने माइनस कर दिए, तो हमारे हो गए 22 लाख रुपीज यहाँ पे। और कॉल्स इन एडवांस हमारे पास पड़ा हुआ है 500 शेयर का, एप्लीकेशन टाइम का 3 रुपीज, तो 1500 रुपये हमारे पास कॉल्स इन एडवांस है। तो हमने इसको माइनस करके बैंक अमाउंट निकाल लिया। देन विल गो फॉर द फॉरफीचर, शेयर फॉरफीट करते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं किया है इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम की भी एंट्री डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया। सो कॉल्स इन एरियर जो है हमने ये 2000 वाला कॉल्स इन एरियर हमने यहाँ सेम लिख दिया, वही 2000 वाला, और हमारे शेयर फॉर फीट हुए 1000, और अलॉटमेंट तक हमने उससे मांगे थे 3 रुपीज एप्लीकेशन और 4 रुपीज अलॉटमेंट, 7 रुपीज, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 7000, तो शेयर कैपिटल में हमारे आ गए 7000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 1000 शेयर है, 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 1000 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1000 विल बी द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिफरेंस निकालिए, 6000 विल बी अवर शेयर फॉर फीचर। आफ्टर दैट बैंक की एंट्री पास करते हैं, रीशू करना है, हमने रीशू करे हमने 14 रुपीज के, हमने कितने के रीशू किए 14 रुपीज के, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 14,000 हमारा जो है बैंक अमाउंट हो गया। शेयर कैपिटल है हमारी पेड अप है 7 रुपीज है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 7000 विल बी शेयर शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया 1000 multiplied by 7, 7000 will be the security premium। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हमें निकालना है, हमारे पास इस एंट्री में डेबिट फॉर फ्यूचर अमाउंट नहीं है, इसलिए 6000 जो ये है फॉर फ्यूचर अमाउंट, यही हमारा कैपिटल रिजर्व अमाउंट होगा। होप इट विल बी द क्लियर टू यू। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 22. In the question number 22, optional are given. So that will be the X Limited has offered the 50,000 equity share of 10 rupees each at the premium of 20, payable as follows: application 20, allotment 40. It means 20 allotment, 20 premium, balance on the first and final call. So final call will be the 30 rupees. The bank balance of the company receives 35 lakh rupees on the account of share application। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पैसे, डायरेक्टली अमाउंट गिवन है, सो आप डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन द प्रोरेटा बेसिस, और सारे प्रोरेटा बेसिस पे हमने अलॉट कर दिए बैलेंस इन द कॉल ऑफ एरिया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमें 1 लाख रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिला, और 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपीज हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला है। दिस शेयर वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 90 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेड अप पास द जर्नल एंट्री। तो हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हमें सबसे पहले हमें जो रिसीव्ड हुआ है वो अमाउंट हम निकाल लेते हैं। हमें रिसीव्ड हुए हैं 35 लाख रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 35 हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आता है ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री में
शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दे रखी है हमें 35 लाख रुपीस की, और शेयर, और हमें शेयर इशू करने हैं 50,000 इंटू 10। सो 50,000 इंटू 10, हाँ 50,000 शेयर हमें इशू करने हैं, और हमारी एप्लीकेशन है 50 रुपीज की, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो 25 लाख रुपीस हमारी शेयर कैपिटल होगी। और जो 35 - 25 10 लाख रुपीस का हमारा एडवांस ऑन अलॉटमेंट होगा। उसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री हमारी जो है, अलॉटमेंट की एंट्री जो है हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू द शेयर कैपिटल एंड द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर अलॉटमेंट है हमारा कितने का है, 40 रुपीज का है। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 शेयर, 20,000 शेयर हमारे शेयर अलॉटमेंट में चले जाएंगे। 20 रुपीज की अलॉटमेंट है, 20 का प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल मल्टी को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट विल बी द 10 लाख, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 20 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 शेयर, दैट विल बी द 10 लाख। फोर्थ एंट्री रिसीव की एंट्री करेंगे। हमारी, हमें 20 लाख रुपए लेने थे अलॉटमेंट पे, हमें वो 10 लाख रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे दे गया था, वो हमने माइनस कर दिए कि अब कितने लेने हैं, 10 लाख रुपए। सो बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए हमने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए थे, टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख रुपीज। कॉल्स इन एरियर हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज, कॉल्स इन एरियर 1 लाख डाला। 9 लाख रुपीज हमारे बैंक के अमाउंट, बहुत इजिली से आगे हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ी, सिंपल ट्रिक से। टेक सेम एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी 15 लाख रुपीस की है, क्योंकि 30 रुपीज का शेयर, 30 रुपीज की फाइनल कॉल है। 50,000 शेयर है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट विल बी 15 लाख। बैंक एंट्री देखते हैं। बैंक एंट्री में हमें ऑलरेडी पता है कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, this will goes to the शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 15 लाख रुपीस चले गए हमारे, और कॉल्स इन एरियर हमें 1,50,000 का ऑलरेडी गिवन है, तो 15 लाख में से 1,50,000 माइनस किए, 13,50,000 विल बी द बैंक अमाउंट। अब हमें शेयर फॉरफीट करना है। शेयर हमने फॉरफीट किए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, कॉल्स इन एरियर। सो हमें कॉल्स इन एरियर 1 लाख प्लस 1,50,000, 2,50,000 कॉल्स इन एरियर हमें नहीं मिला, तो हमने सिंपली ट्रांसफर कर दिया। 50,000 शेयर है, 10 रुपीज 100 रुपीज का शेयर है, 5 लाख रुपीज इधर आ, 5 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा 20 रुपीज का है, और 50,000 शेयर है, मल्टीप्लाई किया 20 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, 1 लाख रुपी विल बी द अमाउंट फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 5 lakh plus 1 lakh 6 lakh minus 2,50,000, 350 will be your share forfeiture amount। रीइश्यू किया है हमने 90 रुपीज का, सो 90 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, 150 divided by 30 rupees final call, so this will be the 5,000, that will be the 5,000 share, 50,000 share। So that will be the 50,000 शेयर, बिकॉज हमारे पास 1.5 लाख रुपए हमें नहीं मिले हैं, और और हमारा जो है फाइनल कॉल 15 रुपीज की है। सो 5,000 शेयर हमें नहीं मिले हैं, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 रुपीज, तो 4,50,000 विल बी द बैंक अमाउंट, और हमारा फेस वैल्यू है 100। सो 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 5 लाख विल बी द शेयर कैपिटल। डिफरेंस निकाला, बैंक शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट 50,000 फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास 3,50,000 जो है क्रेडिट फॉर फ्यूचर है, डेबिट फॉर फ्यूचर हमारा 50,000 का है, माइनस किया दोनों को, डिफरेंस आया 3 लाख। 3 लाख विल बी अवर कैपिटल रिजर्व। So that's the thing।
After that, we have again, we will start the section B, part B. So in the part B, we have the ratios and cash. Yeah. So this one question number 23, which of the following transaction would be the result of inflow of cash? Four options is given. Cash withdrawn from the bank for office use, purchase of machinery worth 2 lakh rupees and issue the share in consideration therefore, sale of furniture 3000 to the one, cash received from the debtor, इसमें से cash receive हो रहा है debtor से, तो D is the right answer. If the debt equity ratio exceed, if the indicate risky the financial position, अगर कौन सा रेशियो से ऊपर जाएगा, स्टैंडर्ड रेशियो बताना है, आइडियल रेशियो बताना है, so ideal ratio is 2:1. So answer is 2:1. 25. 25, which of the following is not the part of the financial cost? Which is financial cost nahi hai. So we know that answer A is the right, bank charges. 26, which of the following transaction would not be created a cash flow? So which of the following not created the cash flow? Question number 26, answer is B. Right answer is B, amortization of the patents. 27, assume the debt equity ratio of a company is 0.50, state whether this ratio would be increased or decreased or remaining unchanged on the purchase of fixed assets on the credit of the 3 months. ठीक है, so 27 का answer is C, no change. Question number 28, which of the following is not the tool of the financial statement? Answer is C, security analysis. Question number 29, D, which of the following is not the component of the income? So your answer is D, gain on sale of investment. After that, we have another question. From the following information, calculate the inventory turnover ratio. हमें inventory turnover ratio निकालना है. Inventory turnover ratio निकालने जब भी हम रेशियो से क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं. तो हमने inventory turnover ratio का फार्मूला लिखा, cost of goods sold or cost of RFO upon average. Inventory is closing inventory 30% of RFO. RFO हमारा given है 2 lakh rupees, so 60,000 will be your closing inventory. और क्लोजिंग इन्वेंट्री की 1/3 है ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 60,000 है, 1/3 कितनी हुई 20,000, तो 20,000 विल बी द ओपनिंग इन्वेंट्री. हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे, सो हमारी एवरेज इन्वेंट्री हुई 40,000. कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फार्मूला आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. आरएफओ हमारे पास 22 lakhs गिवन है और 20% जो है नेट सेल पे है, सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया हमारा 1,60,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फार्मूले में हमने वैल्यूज रखी 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, सो वी विल गेट द 4 टाइम. ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से करने आते हैं. फर्स्ट कॉलम, दिस कॉलम इज ए, दिस कॉलम इज ए, this column is B, this is C is equal to B minus A, and this is D is C upon A. So 8 lakh minus 50,000, with this will 80 lakh minus 50 lakh will be the 30 lakh. 30 lakh divided by 50 lakh multiplied by 100, so your percentage change will be the 60. Same we have to do it. Everybody know how to do it, so don't waste the time on this. So we will do that. We'll go for the next question. That is the next question is cash flow statement. In the cash flow statement, we have to go to the notes of accounts first of all. So 4 lakh, 5 lakh is given. So loss is 1 lakh rupees and provision for tax for is given 76,000. So we subtract it. So 24,000 will be the loss, net profit before the tax and extraordinary items.
24,000 will be the loss, so loss will show into the bracket. Another one, because in the last there the two adjustments are given. So in the adjustment, they have sold the machine and accumulated debt is also there. So we have to make the machine account and accumulated debt account. So for the machine account, to balance BD 25 lakh is given and balance CD 33 lakh is given. Sale is given 6 lakh 40,000 into, yeah, 6 lakh 40,000 into the adjustment, and accumulated debt is 3 lakh 20,000. So gain is given in the question 1 lakh 60. No, gain we have to find out 1 lakh 60,000, and balancing figure will be the 16 lakh, that will be the purchase. This purchase goes to the investing activity, and bank sale will go to the investing activity. Gain will go to the operating activity. And anything else? No, nothing else will be is left. So we have to come to the accumulated depreciation account. To the accumulated depreciation account, balance bid is given 5 lakh rupees. By balance to balance sheet is given 6 lakh rupees. Machine account 3 lakh 20,000 rupees. We have to find out the depreciation, that is 4 lakh 20,000. This will go to the operating activity. Come to the operating activity. The operating activity net profit before the tax, we have minus 24,000. Depreciation we have calculated. We have taken from the accumulated debt account 4 lakh 20,000. Interest on the debenture 64,000. Gain we got in the machinery account minus 1 lakh 60,000. So we will got the opening profit before working capital changes 3 lakh rupees. Add in increase in the current liability, trade payables 50,000, less increase into the current assets, inventory 4 lakh, minus किया हमें आए minus के 50,000, that will be the cash generated from the operating activity, less tax paid 56,000. So 1 lakh 6,000 will be our cash used in operating activity. Then we'll go to the another activity, cash from the investing activity. The cash from the investing activity, the two things we have into the machinery account, sale and purchase of the machine. So purchase of the machine is 16 lakh and sale of the machine will be the 1 lakh. And another one is the sale of machinery 6 lakh 40,000 we calculated. So minus 10 lakh 60,000 will be your cash used from the investing activity. We have go to the financing activity. Issue of the share is 9 lakh. Issue of the debenture will be 3 lakh. And interest paid on the debenture 64,000 minus here. So total will be the 11 lakhs 36,000. फिर हमें नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी द 30,000. इसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे. कैश एंड इक्विवेलेंट हमें करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हुए हैं 78,000, 1,56,000. 1,56,000 को हमने प्लस किया माइनस के 30,000 पे, तो हमारे पास आया 1,26,000, जो कि इक्वल है क्लोजिंग cash or cash equivalent के. So it means our cash flow is right. I hope you will understand all these things. If again you have any doubt in any point, so you can WhatsApp me personally on my number. So I will reply you. Thank you and good night.